हेलो दोस्तों। आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ नई नई जो पिछले दिन जो मैंने रीडिंग किया था चैप्टर नंबर 6 के बारे में, उसकी जो उसको मैंने किया आपको बताया था कि उसे मैं एक पार्ट पार्ट करके डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 ना बहुत बड़ी है। ओके। तो आज हम उसकी जो नेक्स्ट जो 10 पेजेस है उसके बारे में हम तो आज रीडिंग करेंगे। स्लोली रीडिंग करेंगे, अच्छे से रीडिंग करेंगे। ओके। अगर कोई नई न्यू है तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं द ब्रेन द स्टोरी ऑफ बुक को रीडिंग कर रहा हूँ। एंड इसकी जो लास्ट लास्ट चैप्टर नंबर 6 को अभी मैंने कंटिन्यू चल रहा है रीडिंग। एंड ये सेकेंड पार्ट होने वाली है। ओके इसकी। उसके बाद थर्ड पार्ट आएगी, थर्ड पार्ट में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, उसके बाद जो भी है उसे हम देखने वाले हैं लास्ट जो आने वाले वीडियोस में। तो आज की जो टॉपिक है उसके ऊपर हम आते हैं। एंड फिर से आप सभी को मैं वेलकम करना चाहूँगा तहे दिल से। एंड पहले आप सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। आप सबको बताना चाहूँगा लास्ट मैंने हाउ टू गेट ए बेटर बॉडी, कैसे हम एक बेटर बॉडी को पा सकते हैं, इसके बारे में रीडिंग किए थे। तो इसमें क्या था, ओके इसमें था कि जैसे ओके ये इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। उसके बाद आज की जो टॉपिक है उसके ऊपर हम जाने वाले हैं। इसमें जो लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था अबाउट हाउ टू गेट बेटर बॉडी, कैसे बेटर बॉडी पा सकते हैं। मतलब ये कैसे ही नॉर्मल जो हम समझते हैं ऐसे नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे दैट टाइम वो नेवर कभी भी सोच नहीं सकते थे, सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले जनरेशन में इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जैसे हम एक दूसरे को कितने दूर ग्लोबल की एक दूसरे पे अपोजिट साइड पे हो, लेकिन हम बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू में। ये इम्पॉसिबल कोई सोचा नहीं होगा। हमारे जो बहुत बहुत एंसेस्टर पुराने एंड जो आने वाले हमारे जो डिसेंडेंट होंगे, हमारे जो न्यू जनरेशन आएगी, उन्हें भी वो पता नहीं चलेगा कि हाँ ये कैसे हो सकता है। अगर वो उस टाइम पे अगर जो आने वाले जनरेशन में अगर कुछ चेंजेस वही होगी बॉडी को लेकर, ब्रेन को लेकर, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि हाँ ऐसे भी एक बॉडी थी जहाँ पर नॉर्मल नेचुरल वे से कुछ हो रहा था। ओके, क्योंकि उनके टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई होगी कि जैसे कि मैंने फेरिफेरल डिवाइसेस कैसे यूज़ करते हैं ना, बाहर के मेमोरी आपके दिमाग में बाहर एक्सटर्नल मेमोरी होगा एंड उससे आपके डिवाइस में कनेक्ट किया जाएगा। आप डिवाइस कौन सी होगी, आपकी ब्रेन होगी, बॉडी। वेब कैम भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके आँखें नहीं तो वेब कैम से, अगर आप सुन नहीं सकते तो इकोलर नामक वो इम्प्लांट करने के बाद उसे आपको इलेक्ट्रिकली आपको सुनाई देगी। बहुत सारी चीज़ें एक इस्टेब्लिश और इन्वेंट या डिस्कवर हो चुके होंगे। तो ये था अबाउट लास्ट वीडियो में। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है दैट इज स्टे इन लाइफ, स्टे इन लाइफ। We already to extend the human body, but no matter how much we enhance ourselves, there is one snag that's difficult to avoid. Our brains and bodies are built of physical stuff. They will deteriorate and die. They will come. They will There will come a moment when all your neural activity will come to a halt.
And then the glorious experience of being conscious will come to an end. It does not matter who you know or what you do. This is the fate of all of us. In fact, it's the fate of all life. But only humans are so unusually foresighted that we suffer over this knowledge. Not everyone is content to suffer. Some have chosen to fight the death's spectre, scattered confederacies of researchers are interested in idea that a better understanding of our biology can address our mortality. What if in the future we did not have to die? Okay, when my friend and mentor Francis Crick was cremated, I spent some time thinking about what a shame it was that all his neural matter was going off in flames. The brain contained all the knowledge, wisdom, and intellect of one of the heavyweight champions of 20th century biology. All the archives of his life, his memories, his capacity for insight, his sense of humor were stored in physical structure of his brain, and simply because his heart had stopped, everyone was content to throw away the hard drive. It made me wonder, could the information in his brain be preserved somehow? If the brain were preserved, could a person's thoughts and awareness and the person's personhood ever be brought back to life? For the first 50 years, the Alcor Life Extension Foundation has been developing technology they believe will people living today to enjoy a second life cycle later. The organization currently stores 129 people in a deep fridge that halts their biological decay. Here is how cry, cryo, cryo of cryo reservation work. First, an interested party signs his life insurance policy over the foundation. Then, upon the legal declaration of his death, Alcor is allotted a local team sweeps in to manage the body. The team immediately transports the body to an ice bath in a process known as cryoprotective perfusion. They circulate 16 different chemicals to protect the cells as the body cools. The body is then relocated as quickly as possible to Alcor operating room for the final stage of the procedure. The body is cooled by computer controlled fans circulating extremely low temperature nitrogen gas. The goal is to cool all parts of the body below 124 degrees Celsius as rapidly as possible to avoid any ice formation. The process takes about 3 hours, at the end of which the body will have vitrified that is reached a stable ice-free state. The body is then further cooled to minus 196 over the next 2 weeks. Not all clients choose to have their
whole body frozen. A less expensive option is to simply preserve the head. The separation of the head from the body is performed on a surgical table where the blood and the fluids are washed out, and as with the whole body, clients are replaced with liquids that fix the tissue into place. At the end of the procedure, the clients are lowered into ultra cooled liquid in giant stainless steel cylinders called dewars. This is where they will remain for a long time. No one on the planet today knows how to successfully unfreeze and reanimate these frozen residents. But that's not the point. The hope is that one day the technology will exist to carefully though and then the revive the people in this community. Civilizations in the distant future, it is presumed, will command the technology to cure the diseases that ravaged these bodies and brought them to a halt. Alcar members understand that the technology may never exist to revive them. Each person dwelling in the Alcar Diwars took a leap of faith, hoping and dreaming that someday the technology will materialize to throw them out, revive them, and give them a second chance at life. The venture is a gamble that the future will develop the necessary technology. I spoke to a member of the community who awaits his eventual entry into the D Wars when the time comes, and he allowed it. The whole conception was a wager, but he pointed out at least it gives him a better than zero chance of cheating death, better odds than the rest of us. Dr. Max Moore, who runs the facility, does not use the word immortality. Instead, he says Alcor is about giving people a second chance at life with the potential to live thousands of years or longer until the time comes. Alcor is their final resting place. Okay, sorry for the noise, but okay. Stay in life. ओके इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है जो हमारी ब्रेन एक मेमोरी जैसा है, जो भी हम कैप्चर करते हैं इस मेमोरी अंदर सेव होती है। तो नियर फ्यूचर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो इस ब्रेन के अंदर जो भी मेमोरीज हैं, जो फीलिंग्स है, जो कम्युनिटी, जो चीज़ वो देखी है, वो सारी चीज़ उसमें कैप्चर हैं, उस चीज़ को वो देख सकते हैं। ऐसे बिलीव करके एक फाउंडेशन खोला गया है, एंड वो फाउंडेशन क्या करती है कि लीगल तरीके से, जैसे कि किसी का डेथ हो गया तो उनकी जो इंश्योरेंस उस फाउंडेशन इंश्योरेंस की तरफ से उन्हें दिया जाता है, एंड वो बॉडी को यूज़ करते हैं, फ्रीज करके रखते हैं लगभग -124 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो फ्रीज ना हो जाए। ओके, एंड इसके बाद इसके अंदर जो स्टे इन लिव टॉपिक के अंदर जो एक बॉक्स दिया है जहाँ पर लिखा है लीगल वर्सेस बायोलॉजिकल डेथ। और लीगल वर्सेस बायोलॉजिकल डेथ क्या होता है? Okay, a person is declared legally dead
when either his brain is clinically dead or his body has experienced irreversible cessation of respiration and circulation. For the brain to be declared dead, all activity must have ceased in the cortex involved in higher function. After brain death, vital functions can still be maintained for organ donation or body donation, a fact critical for alcohol. Biological death, on the other hand, happens in the absence of intervention and involves the death of cells throughout the body, in the organs, and in the brain, and means that the organs are no longer suitable for donation. Without oxygen from circulating blood, the body's cells rapidly start to die. To preserve a body and brain in its least degraded form, cell death must be stopped or at least declared as quickly as possible. In addition, during cooling, the priority is to prevent each ice crystals from forming, which can destroy the delicate structures of the cells. ओके, लीगल वर्सेस बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब होता है कि ओके, बायोलॉजिकल डेथ होता है ना, जो नेचुरली डेथ होता है टाइम होने के बाद ऑटोमेटिकली डेथ। लीगल मतलब क्या है? लीगल जो पर्सन डिक्लेयर करता है से यहाँ पर सिग्नल भी लगता है एंड लीगली डेड एंड इधर हिज ब्रेन इज क्लिनिकली डेड एंड हिज बॉडी इज एक्सपीरियंस रिवर्सिबल इक्वेशन एक्सपीरियंस। ओके, किसी की बॉडी डेड हो चुकी है, किसी की सेल्स ब्रेन सेल्स डेड हो चुकी है, वो लीगली जाकर वो साइन करके वो अपने आप को डेथ घोषित कर लेते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल immortality. Digital immortality. Not everyone with a penchant for life extension had a fondness for grief reservation. Others have moved along a different line of inquiry. What? There were other ways to access the information stored in a brain, not by bringing a diseased person back to life, but instead by finding a way to read out the data directly. After all, the submicroscopically detailed structure of your brain contains all your knowledge and memories. So, why could not that book be decrypted? Let's take a look at what would be required to do that. To begin, we had need extraordinarily powerful computers to store the detailed data of an individual brain. Fortunately, our exponential growing computational power hints at profound possibilities. Over the past 20 years, computing power has increased over 1,000 times. The processing power of computer chips has doubled approximately every 18 months. And this trend continues. The technologies of our modern era allow us to store unimaginable amounts of data and run gargantuan simulations. Given our computing potential, it seems likely that we will someday be able to scan a working copy of the human brain and onto a computer substrate. There is nothing in theory that precludes this possibility. However, the challenge needs to be realistically appreciated.
The typically brain has about 86 billion neurons, each making about 10,000 connections. They connect in a very specific manner, unique to each person. Your experiences, your memories, all the stuff that makes you is represented the unique pattern of the quadrillion connections between your brain cells. This pattern are far too large to comprehend is summarized as your connectome in all ambitious endeavor. Dr. Sebastian Siwang at Princeton is working with his team to excavate the fine details of a connectome. With a system this microscopic and complex, it's inordinately difficult to map out the network of connectivity. Siwon uses serial electrode microscopy, which involves making a series of very thin slices of brain tissue using an extremely precise blade. At the moment, mouse brains are used, not human. Each slice is subdivided into tiny areas, and each of these is scanned by an extraordinary powerful electron microscope. The result of each scan is a picture known as a electron micrograph, and this represents a segment of brain magnified 100,000 times. At this resolution, it's possible to make out fine features of the brain. Once these slices are stored in the computer, the more difficult work begins. One very thin slice at a time. The borders of the cells are traced out traditionally by hand, but increasingly by computer algorithms. Then the images are stacked atop one another, and an attempt is made to connect the full extent of individual cells across slices to reveal them in their three-dimensional richness. In this painstaking manner, a model emerges revealing what is connected to what. The dense spaghetti of connections is just a few billionth of a meter across, about the size of the head of a pin. It's not difficult to see why reconstructing the full picture of all the connections in a human brain is such a daunting task, and one that we have no real hope of accomplishing anytime soon. The amount of data required is gargantuan. To store a high resolution architecture of a single human brain would require a zettabyte of capacity that's the same size as all digital content of the planet right now. Throwing fire into the future, let's imagine that we could get a scan of your connectome. Would that information be enough to represent you? Could this snapshot of all the circuitry of your brain actually have consciousness? And your consciousness probably not. After all, the circuit diagram, which shows us what connects to what, is only half of the magic of the functioning brain. The other half is all the electrical and chemical activity, and that runs on top of those connections. The alchemy of thought, of feeling, of awareness, this emerges from quadrillions of interaction between brain cells every second. The release of chemicals, the changes in the shapes of proteins, the traveling waves of electrical activity down, the axons of neurons. Consider the enormity of the connectome, and then multiply that by the vast number of things
happening every second at every one of those connections, and you will get a sense of magnitude of the problem. Unfortunately for us, system of this magnitude cannot be comprehended by the human brain, and fortunately for us, our computational power is moving in the right direction to eventually open up a possibility, a simulation of the system. The next challenge is not just reading it out, but making it run. Such a simulation is exactly what a team of researchers at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Switzerland is working toward. Their goal is to deliver by 2023 a software and hardware infrastructure capable of running a whole human brain simulation. The Human Brain Project is an ambitious research mission that collects data from neuroscience laboratories across the globe. This includes data on individual cells, their contents, and structure to connect data to information about large scale activity patterns in groups of neurons, slowly one experiment at a time. Each new finding on the planet provides a tiny piece of titanic puzzle. The goal of a human brain project is to achieve a simulation of brain that uses details neurons and realistic in their structure and their behavior. Even with this ambitious goal and over a billion euros of funding from European Union, the human brain is still totally out of reach. The current goal is to build a simulation of a rat brain. We are only at the beginning of our endeavor to map and simulate of a full human brain, but there is no theoretical reason why we cannot get there. But here is a key question: would a working simulation of a brain be conscious? If the details were captured in the simulated correctly, would we be looking at a sentient being? Would it think and be self-aware? Okay. Uh, डिजिटल इमोर्टलिटी मतलब ओके बताना चाहूँगा इसमें क्या है। ओके, डिजिटल इमोर्टलिटी मतलब ये ब्रेन को लेकर एक एक्सपेरिमेंट हो रही है कि जो हमारे जो थॉट्स, जो मेमोरीज, जो भी कुछ मोमेंट्स, गुड मेमोरीज, गुड मोमेंट्स जो रह चुके हैं, उसे जीवंत करके रखना है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। एंड इसमें जैसे हम इवोल्यूशन हो चुके हैं, ऐसे 90s में हम कैसे इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल था एंड रिलेस कैसे कैसे हमारी जो डेवलपमेंट हुई, इसके बारे में एक पेज है, उसका आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। द पेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। ओके, इन 1965 जॉर्डन मोरे, co-founder of the computing giant Intel, made a prediction about the rate of progress in computing power. Moore's law forecast that as transistors become smaller and more precise, the number that could fit into a computer chip would double every 2 years, exponentially increasing computing power over time. Moore's prediction has held true through the intervening decades and has become shorthand for the exponentially accelerating phase of technological change. Moore's law is used by the computing industry to guide long-term planning and set goals for technological advancement, because the law predicts that technological progress will increase exponentially rather than linearly. Some predict that at today's rate there will be 20,000 years worth of progress in the next 100 years. At this pace, we can expect to see a radical advancement in the technology that we rarely own. ओके, 1965 में
जो हमारे जर्दन मरे नामक है, जो कि को फाउंडर ऑफ कंप्यूटिंग जियांट इंटेल के थे, वो प्रेडिक्ट किए थे कि जो हमारी टेक्नोलॉजी में जो यूज करा जाता है ट्रांजिस्टर, अगर ट्रांजिस्टर की जो साइज जितना छोटा किया जाएगा उतना ही वो पावरफुल बनाया जा सकता है। एंड एक्चुअली भी वो हुआ। एंड अबाउट द टाइम अभी हम कितने सारे डिवाइसेस हम अभी यूज कर रहे हैं, ओके। एंड पहले कितने था, 2G था, 1G, 2G, 3G, 4G, अभी 5G, उसके बाद 6G भी आ चुका है। देख सकते हो कितना ज़्यादा चेंजेस आ रही है। एंड नेक्स्ट में और इसमें भी और एक बॉक्स लिखा है जहाँ पर सीरियल इलेक्ट्रॉन एंड माइक्रोस्कोपी एंड द कनेक्टोम के बारे में बात किया गया है। तो इसमें क्या है, तो लेट्स लुक एट दिस, देखते हैं। Signals from the environment are translated into electrochemical signals carried by the brain cells. It is the first step by which the brain taps into information from the world outside the body, tracing the dense tangle of billions of interconnected neurons requires specialized technology as well as the world's surface blade. A technique called serial block phase scanning electron microscopy generates high resolution 3D models of complete neural pathways from tiny slices of the brain tissue. It's the first technique to yield 3D images of the brain. The nanoscale resolution, 1 billionth of a meter, like a daily slicer. A high precision diamond blade mounted inside a scanning microscope coats layer after layer from a tiny block of brain, producing a film strip in which each frame is an ultra thin slice. Each silver is scanned by electron microscopy. The scans are then digitally layered on top of the another to create a high resolution 3D model of the original block. By tracing features from the slice to slice, a model emerges of the tangle of neurons that crisscross, and the intertwine. Given that an average neuron can be between 4 to 100 billion of a meter in length and have 10,000 different branches, it's a formidable task. The challenge of mapping a full human connectome is expected to take several decades. ओके, सीरियल इलेक्ट्रोड का माइक्रोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है जिससे जो पहली बार ना 3D जो दिमाग ब्रेन की जो 3D स्ट्रक्चर की जो इमेज हम पहली बार इससे हम कैप्चर कर पाए हैं, ओके। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द another topic, that is does consciousness require the physical stop? क्या कॉन्शियस ज़रूरत है फिजिकल स्टॉप के लिए? In the same way, the computer software can run on different hardware. It may be the software of the mind can run on other platforms as well. Consider the possibility this way. What if there is nothing special about biological neurons? And instead, it's only how they communicate that makes a person who they are. That prospect is known as the computational hypothesis of the brain. The idea is that the neurons and synapses and other biological matter are not the critical ingredients. It's the computations they happen to be implementing. It may be that what the brain physically is does not matter, but instead what it does. If that turns out to be true, then in theory you could run the brain on any substrate as long as the computations shown in the right way. Then all your thoughts, emotions, and the complexities should arise as a product of the complex communications within a new material. In theory, you might swap cells for the
circuitry or the oxygen for the electricity. The medium does not matter, provided that all the pieces and the parts are connecting and interacting in the right way. In this way, we may be able to run a fully functioning simulation of you without a biological brain. According to the computational hypothesis, such a simulation would actually be you. The computational hypothesis of the brain is just that, a hypothesis, one that we don't yet know is true. After all, there may be something special and undiscovered about the biological weight work, and in that case, we are stuck with the biology we arrived with. However, if the computational hypothesis is correct, then a mind could live in a computer. If it turns out to be possible to simulate a mind, that leads to a different question. Do we have to copy the traditional biological way of doing it, or might it be possible to create a different kind of intelligence of our own invention from scratch? Okay, those unconscious records. ओके जैसे कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरत होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एंड उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए डिफरेंट हार्डवेयर चाहिए। उसी तरह हमारी बॉडी एक हार्डवेयर है, ये ब्रेन एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। ओके और इसे पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, या तो अपना काम जस्ट प्रोसेसिंग करना कर रहा है। एंड डू यू हैव टू कॉपी ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल वे एंड माइट पॉसिबल क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, एंड आगे जो आने वाले हमारे दिमाग के स्टडी ऊपर कि और माइंड एंड द टेक्नोलॉजी को जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेक्शन इन डिस्कवर्स आ सकते हैं आने वाली टाइम पे। ओके, ये तो कंपलसरी हो चुकी है। एंड इसके अंदर एक बॉक्स लिखा है रेट ब्रेन्स के बारे में। रेट मतलब कि रेट RAT। द rat has had a terrible reputation for much a human history, but to modern neuroscience, and the mouse plays a crucial role in many areas of research. Rats have larger brains than mice, but both have important similarities to the human brain. In particular, the organization of cerebral cortex, the outer layer that's so important for abstract thinking. The outer layer of human brain, the cortex, is folded over the itself to allow more of it to be baked into the skull. If you flattened the average adult cortex out, it would cover 2500 square centimeters, a small tablecloth. The rat brain, in the contrast, is completely smooth despite these obvious differences in appearance and size. There are fundamental similarities between two brains at the cellular level. Under the microscope, it is almost impossible to tell the differences between a rat neuron and a human neuron. Both brains were off in much the same way and go through the same developmental stages. Rats can be trained to cognitive tasks, from distinguishing between scents to finding their way through the image, and this allows researchers to correlate the details of their neural activity to specific tasks. ओके, यहाँ पर देखें तो जो रैट की जो ब्रेन होता है
वो 2 ग्राम की होती है, एंड ह्यूमन ब्रेन 1400 ग्राम की होती है। ओके, 1.4 ग्राम एक अडल्ट की। ओके, एंड इसमें कहा जाता है कि जो रेट एंड ह्यूमन ब्रेन की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं वो सेम होते हैं, एंड कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं ओके उनके बीच में। एंड नाउ कमिंग टू द अनदर टॉपिक, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई थिंक आप सभी को पता होगा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई आज के अभी के टाइम पे ना एआई बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। Nowadays, everyone uses AI to डूइंग देयर वर्क। अपना काम करवाने के लिए एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है। एंड आपको बताना चाहूँगा, जितना हम एआई को डेवलप करते हैं, एआई कैसे डेवलप होती है, कुछ एक स्पेसिफिक नॉलेज लेकर एआई डेवलप होती है। एंड मुझे पता नहीं ओवर द टाइम वो उसे अपग्रेड किया जाएगा, बट जब तक वो होगा तो क्रिएटिविटी, आई थिंक क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। लोग सोचने लगेंगे कि अरे ये तो एआई को बोल देंगे तो ये कर देगा, तो क्यों इतना हम टेंशन लेते हैं। एंड वो भूल जाते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी वहीं पे दब जाता है। ओके, तो क्रिएटिविटी बचा के रखो, वो आपकी जो आने वाली जनरेशन को वो ट्रांसफ़र करो, उससे भी इनको भी सिखाओ भाई, एआई पर डिपेंड मत करना। ओके, हो सकता है एआई के बिना सब कुछ किया जा सकता है, बट अरे तुम जो करोगे वही चीज़ तो वो करेगा ना। तुम कमांड दोगे उससे, वही तो करेगा ना। अगर तुम जो चीज़ ओके सपोज मैं एग्जांपल दूंगा। ओके, एआई एक पॉन्ड की तरह होता है, जहाँ चारों तरफ से बाउंड्री लगा है एंड पानी उसमें अंदर है, वो बाहर नहीं जा सकता पानी। अगर बाहर से अगर पानी लाकर इसमें डाला जाएगा तो पानी रह सकता है, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता वो, मतलब कुछ समझे। लेकिन जो समुद्र है, वो वो एक क्रिएटिविटी का फील्ड है। तुम वहाँ से बाहर लेकर जाओ या बाहर से अंदर लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी क्रिएटिविटी को मारना मत, एक पौंड की तरह कभी पौंड में रखना मत अपनी क्रिएटिविटी को। एक वसन, एक समुद्र की तरह उसमें रखो, जैसे कि उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि अगर तुमसे कुछ भी लिया जाए, तुम कुछ तुम्हारा जो क्रिएटिविटी कुछ भी इन्वेस्ट करो, वही बढ़ती जाएगी, लेकिन घटना नहीं चाहिए। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। People have been trying for a long time to create machines that think. That line of research, artificial intelligence, has been around since at least 1950। 1950 से ही ये बना AI पर काम चल रही है। Although the initial pioneers were heady with optimism, the problem has turned out to be unexpected, difficult. Although we will soon have cars that drive themselves, and it's almost 2 decades since a computer first beat a chess grandmaster, the goal of truly sentient machine still awaits to be achieved. When I was a child, I expected that we would have robots interacting with us by now, taking care of us and engaging in meaningful conversation. The fact that we are still quite distant from that outcome speaks to the depth of the enigma of how the brain functions and how far we still have to go to the decode mother's nature's secret. One of the latest attempts to create an artificial intelligence can be found at the University of Plymouth in England. It's called iCove, and it's humanoid robot designed and engineered
to learn like a human child. Traditionally, robots are pre-programmed with what they need to know about their tasks. But what if robots could develop the way a human infant does, by interacting with the world, by imitating and learning by example? After all, babies don't come into the world knowing how to speak and walk, but they come with curiosity and they pay attention and they imitate. Babies use the world they are in as a textbook to learn by example. Could not a robot do the same? The eye curve is about the size of a 2-year old. It has eyes and ears and touch sensors, and these allow it to interact with and learn about the world. If you present a new object to ICO and name it, this is a red ball. A computer program correlates the visual image of the object with the verbal level. So the next time you present the red ball and ask, "What is this?" it will answer, "This is a red ball." The aim is that with each interaction, the robot continually adds to its base of knowledge by making changes and connections within its internal code. It builds a re repertoire of appropriate responses. It often gets things wrong. If you present and name several objects and force ICOF to name them all, you will get several mistakes and a large number of "I don't know" responses. That's all part of process. It also reveals how difficult it is to build intelligence. I spent quite a bit of time interacting with ICOF, and it's an impressive project, but the longer I was there, the more it was obvious that there was no mind behind the program. Despite its big eyes and the friendly voice and the childlike movements, it becomes clear that ICOV is not sentient. It's run by lines of code, not trains of thought. And even though we are still in the early days of AI, one cannot help but chew on an old and deep question in philosophy. Can lines of computer code ever come to think? While ICOP can say a red ball, does it really experience redness? Or the concept of the roundness? Do computers do just what they are programmed to do? And can they really they have internal experience? ओके यही लास्ट में क्या क्वेश्चन राइज होता है, क्या क्या यही इंटरनल एक्सपीरियंस कर सकता है क्या? जैसे हम जो इंसान जो पैदा होते हैं वो एक क्यूरस, उन्हें तो पता नहीं होता कि लैंग्वेज पहले से सीख के नहीं आते हैं, वो पैदा है इसलिए वो क्यूरियसली पैदा होते हैं, एंड जो पैदा होने के बाद वो क्यूरस जानने को क्यूरस होते हैं, एंड वो क्यूरस के लिए ही सीख पाते हैं लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज या कौन सी चीज़ भी। लेकिन कंप्यूटर ना पैदाइश ही उसे प्रोग्राम्ड है, क्या क्या करेगा, क्या करा जाएगा, क्या करना है क्या नहीं, प्रोग्राम लाइन। कंप्यूटर को चलाने के लिए एक लाइन ऑफ कोड चाहिए, लेकिन हमारा बॉडी पूरी बकडी बॉडी को चलाने के लिए थॉट्स चाहिए। अगर हम थॉट्स सही अच्छा सोचे तो अच्छा में हम जाएंगे, अगर कुछ भी गलत सोचा तो गलत जाएंगे ही हम। ओके, कैन इज रियली पॉसिबल कि भाई रोबोट्स भी इंसान की तरह सोच सकते हैं? बिकॉज मेरे हिसाब से हो सकता है, बट मे बी और मे नॉट बी। बिकॉज मे नॉट क्योंकि हम जो भी हम लाइन देते हैं वो तो वो फीलिंग्स तो उससे महसूस नहीं कर सकते ना रोबोट्स, दे हैव नो लाइन्स। अगर कुछ भी थोड़ी सी एरर हो गया ना लाइन में तो वो रुक जाएंगे, करेंगे नहीं वो टास्क, लेकिन रुक के वो उसे करेक्ट कर नहीं सकते। जैसे इंसान कुछ भी गलत हुआ, अगर कुछ में प्लानिंग किया हो
ये प्लान मेरा सक्सेस नहीं हुआ, तो और सडनली उसी टाइम पे ही मैं और एक प्लान बना के उसे एग्जिट करना शुरू कर दूंगा। लेकिन रोबोट के पास तो ऐसे ऑप्शन नहीं होंगे। ओके, लेकिन हो सकता है इसलिए क्योंकि हम सारे थॉट्स को इतना जो हो सकता है भी, मे और मे नॉट भी, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एंड ब्रेन के साथ वो क्या क्या सब डेवलपमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा, इसमें ही लिखा है। हो सकता है, नहीं हो सकता है अभी। ओके, एंड अभी मैंने बोल रहा था कि कंप्यूटर क्या सोच सकता है इंसान की तरह। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है उसी के ऊपर, कैन ए कंप्यूटर कैन थिंक। Can a computer ever be programmed so that it has awareness, a mind? In the 1980s, the philosopher John Searle came up with a thought experiment that gets right to the heart of this question. He called it the Chinese room argument. It goes like this: I am locked in a room. Questions are passed to me through a small letter slot, and these messages are written only in Chinese. I don't speak Chinese. I have no clue at all what's written on these pieces of paper. However, inside this room, I have a library of books, and I contains a step-by-step instructions that tell me exactly what to do with these symbols. I look at the grouping of symbols and I simply follow steps in the book that tell me what Chinese symbols to copy down in response. I write those on the slip of paper and pass it back out of the slot. When the Chinese speaker receives my reply message, it makes sense to her. It seems as though whoever is in the room is answering her questions perfectly, and therefore it seems obvious that the person in the room must understand Chinese. I have fooled for, of course, because I am only following a set of instructions with no understanding of what's going on. With enough time and a big enough set of instructions, I could answer almost any question posed to me in Chinese. But I, the operator, do not understand Chinese. I manipulate symbols all day long, but I have no idea what the symbols means. Shirley argued this is not just what is happening inside a computer. No matter how intelligent a program like ICOV seems to be, it's only following sets of instructions to spit out answers, manipulating symbols without our really understanding what it's doing. Google is an example of this principle. When you send Google a query, it does not understand your question or its own answer. It simply moves around zeros and ones in logic gates and returns zeros and ones to the U. With a mind-blowing program like Google Translate, I can speak sentence of Swahili and it can return the translation of Hungarian. But it's all algorithm, it's all symbol manipulation. Just like the person inside the Chinese room, Google Translate does not understand anything about the sentence. Nothing carries any meaning to it. Chinese room argument suggests that as we develop computers that mimic human intelligence, they won't actually understand what they are talking about. There will be no meaning to anything they do. Shirley used this thought experiment to argue that there is something about human brains that won't be explained if we simply analogize them to digital computers. There is a gap between symbols that have no meaning and our conscious experience. There is ongoing debate about the interpretation of the Chinese room argument, but however one construes it, the argument exposes the difficulty and the mystery of how physically pieces and the parts ever come to equal our experience of being alive in the world. With every attempt to simulate
or create a human-like intelligence, we are confronted by a central unsolved question of neuroscience. How does something as rich as the subjective feeling of being me, the sting of pain, the redness of red, the taste of the grapefruit arise from billions of simple brain cells running through their operations. After all, each brain cell is just a cell following local rules, running its basic operations by itself. It cannot do much. So, so how do billions of these add up to the subjective experiences of being me? ओके, ये टॉपिक था कि क्या नहीं कंप्यूटर थिंक, क्या कंप्यूटर सोच सकता है? नो, इन माई केस इसमें कहा गया नहीं हो सकता, बिकॉज कंप्यूटर ना एक ऐसे सिंबल्स को समझ नहीं पाता जो हम इंसान समझते हैं कि ये इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। एंड कंप्यूटर ना एक लॉगरिथम में चलता है, क्वेरीज। एंड यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक सिंबल दिया गया था एआई को, लेकिन वो उस सिंबल को नहीं समझ पाई एंड उन्होंने 0110 ऐसे करके वो कोड जो कि अलगारिदम होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो इसे मैसेज बैक आती है रिटर्न में। एंड और एक गूगल ट्रांसलेट उन्हें सुहाइल एक लैंग्वेज होती है, उसमें वो ट्रांसलेट किया, लेकिन वो हंगेरियन में देती है रिटर्न में। ओके, वो ये सारे ना लॉगरिदम की काम है कंप्यूटर सिस्टम में। तो आई इज नॉट मे बी, बट नाउ डेज तो ये हो नहीं सकता कि नेवर। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द मे हो सकता है, बट मे नाउ डेज ये अभी तो नहीं हुआ है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए इतना ही। जो लास्ट टॉपिक मैं रीडिंग करूँगा ये होगा द ग्रेटर दैन द सम। ये चैप्टर लास्ट टॉपिक होने वाली है, एंड द अदर part of this chapter will be discussing next video. Okay, greater than the sum. In 1714, Gottfried Wilhelm Leibniz argued that matter alone could never produce a mind. Leibniz was a German philosopher, mathematician and scientist who is sometimes called the last man who knew everything. To Leibniz, brain tissue alone could not have an interior life. He suggested a thought experiment known today as Leibniz meal. Imagine a large meal. If you were to walk around inside of it, you would see its cogs and the struts and the levers all moving. But it would be preposterous to suggest that the meal is thinking or feeling or perceiving. How could a meal fall in love or enjoy a sunset? A meal is just made of pieces of parts, and it is with the brain. And Leibniz asserted, if you could expand the brain to size of meal, just travel around inside it, you would only see the pieces of the parts. Nothing would obviously correspond to perception. Everything would simply be acting on the everything else. And if you wrote down every interaction, it would not be obvious where thinking or feeling perception reside. When we look inside the brain, we see the neurons, synapses, chemical transmitters, electrical activity. We see billions of chattering cells. Where are you? Where are your thoughts, your emotions, the feeling of happiness, the color of indigo blue? How can you be made of mere matter? To Leibniz, the mind seemed inexplicable by mechanical causes. It is possible that Leibniz overlooked something in his argument. By looking at the individual pieces and the parts of the brain, he may have missed a trick. Maybe thinking about walking around it in the meal is a wrong way to approach the question of consciousness. Okay, greater than the sum.
ओके, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। इसमें कहा गया है जो गॉटफ्राइड लेबनिज़ होते हैं वो 1970s में, नहीं 1740, आई थिंक 1714 में एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, जो कि लेबनिज़ एक मैथमेटिशियन फिलोसोफर है। ओके, उन्होंने किया कि अगर एक मील लेते हैं, मील के अंदर हम जाते हैं, तो मील के अंदर ना बहुत सारे पार्ट्स काम करते हो रहते हैं, चलते रहते हैं। चक्री हो गया, उसके धुएं निकलना हो गया। अगर हम मील एंड ब्रेन को एक मील की तरह देखें, तो अगर उसमें ब्रेन का साइज को अगर मील की तरह साइज किया बड़ा किया जाएगा, तो अगर उसके अंदर चल के वॉकिंग अराउंड करके हम देखें तो उनके पार्ट्स वो चलते रहेंगे, जैसे काम करना है तो वो उनकी पार्ट्स वो काम करते रहेंगे। लेकिन इसके ये बात है कि जैसे हमारे थॉट्स थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, कॉन्शियस होता है, क्या मील जो मील होता है वो क्या वो सनसेट को मज़ा ले सकता है, फील कर सकता है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज वो एक पार्ट्स हैं। बट इसमें एक रॉन्ग क्वेश्चन हो गया है कि ऐसे मील के हिसाब से ब्रेन को लेकर उसमें जाकर वॉकिंग अराउंड करके उसे देखना एक ये मिसकंसेप्शन हो सकते हैं। ओके, इतना ही कहा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए भाई, अपना ख्याल रखना एंड ध्यान रखना अपना। एंड जाने से पहले आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा को, जिन्होंने और एक नई दिन दिया है एंड एक कुछ नया सीखने को, नई एक्सपीरियंस करने को। एंड मेरे मम्मी पापा को भी थैंक यू, एंड मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाला सबको थैंक यू, एंड मेरे सराउंड में जो भी है उनको सभी को थैंक यू। एंड वो मेरे ज़िंदगी से कोई गया है, चला गया, उनको भी थैंक यू। जो आने वाला है उनको भी स्वागत है हैप्पीली। एंड जो अभी हैं थैंक यू। एंड जो जितने भी सजीव निर्जीव जीव सबको थैंक यू। ओके, थैंक यू मेरे ज़िंदगी में होने के लिए। ओके, बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड नेवर गेट सैड। कितना भी प्रॉब्लम, कितना बड़ा भी प्रॉब्लम हो, नेवर बी सैड, कीप स्माइलिंग, स्माइल करके उसे सरपास कर दो।